समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा। Namaskar and a very good afternoon to you, Vaishnavi, and to all our listeners tuned into Akashvani. New day, fresh headlines, a new episode of our afternoon magazine Parikrama with a new dateline for you. Let's get started without any delay. First, the headlines making news at this hour of the day. Vaishnavi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा से आगे सोचने और जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता और आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। Prime Minister Modi holds talks with President of Seychelles in New Delhi, announces special economic package of $175 million to support social housing, defense and maritime security. भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। और पुर्तगाल में सोशलिस्ट पार्टी के अंतोनियो जूजे सेगुरो ने राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रे वेंतुरो को हराकर जीत हासिल की। And as always, it's now time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we will talk about Pariksha Pe Charcha. Today, we bring you a program filled with motivation, wisdom and hope, especially for students, parents and teachers tuning in right now. Exams often bring pressure, expectations and anxiety. But what if exams were seen not as fearsome hurdles, but as a celebration of learning? That's exactly the spirit behind Pariksha Pe Charcha, a unique interactive initiative led by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. In the second video episode of the 9th edition of Pariksha Pe Charcha, released today, the Prime Minister engaged directly with students and shared valuable insights on exams, life skills, discipline, creativity, technology, leadership, and also nation building. Let's take a detailed look at the inspiring messages that resonated with millions of young minds across the country. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि परीक्षाएं जीवन का केवल एक चरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। उन्होंने छात्रों से अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और केवल अंक तथा रैंक तक सीमित न रहने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता, जिज्ञासा और आत्मविकास का महत्व शैक्षणिक उपलब्धियों के समान ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता किसी एक परीक्षा के परिणाम से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से क्या सीखता है। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को उद्योग जगत के पेशेवरों से संवाद स्थापित करने, वास्तविक दुनिया की कार्य प्रणालियों को समझने और पुस्तकों से आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की सलाह दी। And on the question of balancing studies and passion, Mr. Modi made an important observation. He said students should never think that academics and creative pursuits are separate or opposing paths. Both,
he said, are equally valuable and can be balanced effectively. He highlighted that art, music, writing, painting, and other creative hobbies help reduce mental fatigue and play a crucial role in maintaining emotional well-being. Shifting focus to civic responsibility, the Prime Minister urged the students to become responsible citizens in their everyday lives. He appealed to them to follow basic rules such as not littering public places, not spitting on roads, obeying traffic signals, and avoiding food wastage. He stressed that nation building begins with disciplined daily behavior, and small actions collectively create a big impact. मेरे देश के 10-12 के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गाँव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। राष्ट्रीय पहलों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान का उल्लेख किया और नागरिकों से घरेलू अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु देश में निर्मित उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने वेड इन इंडिया पहल का भी जिक्र किया और लोगों से देश में ही विवाह समारोह आयोजित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अनुशासन और प्रेरणा के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा जहां ऊर्जा प्रदान करती है, वहीं अनुशासन दिशा निर्धारित करता है। In fact, responding to a student's question on artificial intelligence and technology, Mr. Modi clarified that technology should not be feared. Instead, students should ensure they use technology wisely rather than becoming dependent on it. He described technology as a powerful teacher and encouraged students to use it responsibly for learning, innovation, skill development, and career building. Sharing advice on travel and exposure, the Prime Minister encouraged students to travel not merely as tourists but as learners. He said students should explore new places with curiosity, understanding their culture, history, traditions, and way of life. Such experiences, he noted, broaden thinking and deepen understanding. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आदर्श विद्यार्थी अपने विषयों पर मजबूत पकड़ बनाता है, कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है और अध्ययन में कमजोर सहपाठियों की सहायता करता है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि खेलकूद को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुशासन, टीम भावना और चुनौतियों का सामना करने का साहस विकसित होता है। And on environmental responsibility, the Prime Minister said, protecting natural resources should become a habit. Change, he explained, happens gradually when more people come together with awareness and commitment. When asked about leadership, Mr. Modi said, future leaders must be able to communicate their ideas clearly and effectively. He emphasized that learning should involve writing and practice, not just reading. He also cautioned students against being impressed by success alone, urging them to learn from the humble beginnings of great personalities. Acknowledging India's diversity, the Prime Minister said the country's progress is enriched by its tribal communities, and he encouraged students to keep striving, never settle for less, and always aim higher in life. छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने माता पिता को सलाह दी कि वे घर में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का वातावरण न बनाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से भी आग्रह किया कि वे दूसरों से अनुचित तुलना न करने और इसकी बजाय आत्म सुधार तथा व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। श्रोताओं, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार माई गॉव पोर्टल के माध्यम से 4,50,00,000 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया। ये आंकड़ा इस पहल के प्रति व्यापक विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। Conceptualized by Prime Minister Narendra Modi, Pariksha Pe Charcha aligns with the National Education Policy 2020, promoting confidence, positivity and holistic well-being. The program was telecast on the Prime Minister's YouTube channel, Doordarshan, Akashvani, Ministry of Education's social media platforms and on Waves OTT.
And as we conclude today's broadcast, remember, exams are important, but your mindset is more powerful. Success matters, but character matters more. And learning never ends. It simply takes new forms. श्रोताओं, याद रहे, पॉजिटिव रहें, अनुशासित रहें और आगे बढ़ते रहें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। And let's begin with Goa. The 14th edition of the Goa Arts and Literature Festival will be held from 12th of February to the 14th of February at the International Centre Goa in Panaji. The 3-day festival is free and open to the public and brings together literature, art and music in a unique Goan blend. We have a report on this. Organized by the International Centre Goa in association with Goa Writers Group, the festival will feature major book launches, keynote addresses by noted scholars Estarine Kire and Rakshanda Jalil and a special international delegation from Singapore. Several discussions, poetry readings and sessions on translation, environment, history and society are lined up along with young GALF segment for children and young adults. Explaining the vision behind the festival and its journey over the years, co-curated and noted writer Damodar Mauzo said, "Whereas in Goa, we all know that Goa is known for art, music and literature. It is a hub of music, hub of literature and also hub of art. So we decided to celebrate all the three aspects of these arts. So we have eminent writers, authors, scholars who are to be reckoned with because of their knowledge, scholarship, and this year we have two eminent scholars and authors and translators who are going to give the keynote addresses. We also have a superb Singaporean delegation visiting this year to Gulf. So we are all set to have the inauguration on the 12th, where our own cartoonist and artist Alexis, and we expect all the people of Goa, those who love literature, to attend the festival and enjoy it. With writers, artists and readers coming together once again, the organizers invite people from across Goa and beyond to be part of this celebration of ideas, creativity and culture at the 14th Goa Arts Literature Festival at the International Centre Goa from February 12th to 14th. This is Mahesh Sopade for Parikrama from Panaji. और श्रोताओं, गोवा से रुक करते हैं अगरतला की ओर। 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए देश के हर कोने के हर सेक्टर में आत्मनिर्भरता की न्यूनतम शर्तों को पूरा करना जरूरी है। और उस सपने को पूरा करने की राह पर त्रिपुरा एक मुख्य भागीदार के तौर पर अपनी अपार क्षमता को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हर साल एक औद्योगिक और व्यापार मेला आयोजित करता है। इस साल भी 36वां औद्योगिक और व्यापार मेला 2026 29 जनवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया है, जिसमें एक बार फिर त्रिपुरा पूर्वोत्तर का उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट। The Tripura Industrial and Trade Fair is a unique and vibrant annual event that has been instrumental in guiding the state's industrial sector towards prosperity for over 3 decades. While this event was once merely a platform for promoting Tripura's industrial potential, it is now eagerly awaited by industrialists from other states and even abroad, in addition to the state's own entrepreneurs. And it goes without saying that this year was no exception to that experience, as is evident from the words of Kiran Kitte, Secretary, Department of Commerce and Industries, Tripura. 36 त्रिपुरा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फेयर 2026 इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने राज्य में मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो प्रमोशन करने के लिए जितनी स्कीम है, उस स्कीम का प्रचार, पॉलिसी का प्रचार और हमारे राज्य में उद्योजकता को बढ़ावा देने के लिए जो जब इन्वेस्टमेंट आ रही है प्राइवेट सेक्टर से, उसको भी चालना देने के लिए हमने इसका आयोजन किया है। Thus, over the past 3 decades, through previous 35 industrial fairs, many strong examples of Make in Tripura, much like Prime Minister Narendra Modi's Make in India, are now readily available in the state. And after changing locations several times, this fair, organized by the Department of Commerce and Industries and the Tripura Industrial Development Corporation in the Hapania International Fairground in Agartala, spread across 60,000 square feet, features 580 stalls from Assam, Manipur, Mizoram, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab and Tripura, presenting a vibrant picture of mini India of industrial entrepreneurship. For Parikrama, Shuman Bhattacharjee, Akashvani, Agartala.
And from Goa to Agartala and now to Jammu and Kashmir, where the revolutionary impact of the proactive governance and timely implementation Pragati platform is expediting the pace of major developmental projects across J&K. Pragati has emerged as an impactful mechanism for resolving long-pending issues and ensuring timely execution of big developmental initiatives. Under Pragati, out of 59 issues pertaining to Jammu and Kashmir taken up in earlier Pragati meetings, 57 have already been resolved on merit, placing the Union Territory among the top performers nationally, supplemented by robust district-level follow-up by the administration. A report from our correspondent in Srinagar. At a press briefing, Jammu and Kashmir Chief Secretary Atal Dullu said that the 50th meeting conducted under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi highlighted the importance of the technology-driven governance mechanism that is successfully helping Jammu and Kashmir to execute several projects and complete the same for transformative impact on the ground. जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन। Eminent economic expert from Jammu and Kashmir, Dr. Ijaz Ayub, threw light on the relevance and importance of Prime Minister's personal monitoring of Pragati that's helping Jammu and Kashmir to gain more fruits of socio-economic progress and development. पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट किसी स्टेट में एलोकेट किया, 1,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, वो 1,000 करोड़ इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के पास जाती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो कंप्लीट नहीं होता था तो वो पैसा लैप्स हो जाता था। उसकी वजह से प्लान तो सही था, इंटेंशन भी सही था, पैसा भी था, लेकिन चैलेंज नीचे इम्प्लीमेंटेशन में आया। जब ये पीएम लेवल की कमेटी इसको मॉनिटर करती है एंड डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी आपके चीफ सेक्रेटरी से लेती है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है डिरेल होने की या डिले होने की वो बहुत हद तक मिटिगेट हो जाती है। Dr. Ijaz Ayub further says that Pragati is helping Jammu and Kashmir to pursue big developmental projects with the personal focus and priority on the part of Prime Minister Narendra Modi. फ्यूचर में प्रगति will be a platform, a governance platform, जिसकी वजह से we will be able to kind of have end use of funds, ensure end use of funds and make sure that the governance takes place at the right time. It is hoped that Jammu and Kashmir would attract more attention of Prime Minister Narendra Modi to take forward the developmental activities in all sectors for the equitable socio-economic development of the people of Jammu and Kashmir. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar. केंद्र सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी नक्सलवाद अब अपनी अंतिम पड़ाव पर है। जो नक्सली इस समय सक्रिय हैं, उनके परिजनों ने आकाशवाणी के माध्यम से उनसे अपील की है कि वे भी अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण कर दें और शांति की जिंदगी जिएं। सरकार द्वारा चलाए गए सुनियोजित अभियान का नतीजा है कि पिछले एक साल में 2,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नक्सली मुठभेड़ में भी मारे गए हैं। नक्सलियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने आकर्षक पुनर्वास नीति भी लागू की है। इसे प्रेरित होकर बड़ी संख्या में नक्सली सशस्त्र संघर्ष छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं और देश के संविधान के प्रति अपना विश्वास जताया है। छत्तीसगढ़ के इस बस्तर संभाग में आकाशवाणी सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये घने जंगलों और पहाड़ी वाला एक दुर्गम क्षेत्र है। वर्तमान में जो कुछ नक्सली सक्रिय हैं, उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने सरकार और पुलिस लगातार आकाशवाणी की मदद ले रही है। और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल। And in the ICC Men's T20 World Cup, Scotland defeated Italy by 73 runs in a Group C clash at Eden Gardens, Kolkata. Chasing a target of 208 runs set by Scotland, Italy were bowled out for 134 in 16.4 overs. Put into bat, Scotland scored 207 runs for the loss of 4 wickets in their stipulated 20 overs. George Munsey was the top scorer for Scotland, smashing 84 runs off 54 deliveries. Meanwhile, the Group B clash between Zimbabwe and Oman is underway at the Sinhalese Sports Club in Colombo. Zimbabwe have won the toss and opted to bowl first.
And now coming to the business news of the day. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended today's session on a bullish note. Both indices opened with a gap up and traded within a narrow range throughout the day. The Sensex climbed 485 points or 0.58% to close at 84,066, while the Nifty added 174 points or 0.68% to settle at 25,867. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. In today's episode, we remember tribal freedom fighter Tilanga Khadiya, who was born on 9th February 1806 at Gumla, Jharkhand. Tilanga Khadiya was well known for his revolutionary thoughts, reasoning skills, and dedication to social service. He spearheaded the fight against the British in Chota Nagpur region from 1850 till 1860 against atrocities and land alienation of tribal people. From ages, tribals in Chota Nagpur region had been following the traditional self-governance rule of Padha system, and they were almost free from any kind of outside interference. But this autonomous self-governance rule was disturbed by the regulations imposed by the British during 1850s. Tribals were forced to pay revenue on their own land, which they had been preparing and cultivating for centuries. Poor people had to lose their land when they were unable to repay loans. Tilanga organized people to create awareness among them. He created Juri Panchayat in many villages, which worked as self-governance rule parallel to the British rule. Tilanga raised an army of around 1,500 people who were trained in guerrilla warfare. He attacked Britishers, their middlemen, and every other establishment of the British. British government wanted to suppress this uprising by any means, but Tilanga was very alert and used to control his operations mostly from hideouts inside the forest. However, once when Tilanga was conducting a meeting at a village Juri Panchayat, the British arrested Tilanga and sentenced him to 18 years of imprisonment. After his release, Tilanga revived the struggle against the British. The information about his activities reached the Britishers, and they made plans to kill him. On 23rd April 1880, when Tilanga Khadiya was offering daily prayers, he was shot by a British agent named Bodhan Singh. Escaping Britishers, Tilanga's followers buried his body at Soso Neemthole village of Gumla district. The burial place is known as the Tilanga Topa Tand. This place is considered sacred by the people of Chota Nagpur. Every year on this day, his martyrdom is commemorated by the people, and a week-long Shahid Tilanga Mela is organized. Tilanga Khadiya is an inspiration for his bravery, sacrifice and martyrdom. We salute the great freedom fighter. We also remember freedom fighter Manilal Patel, who was born on 9th February 1922 at Patan district in Gujarat. Manilal, along with his friends, joined the Quit India movement in 1942 during college. He took upon the task to preach the methods of Satyagraha to the people of the neighboring villages around Baroda. On 18th August 1942, after the Satyagraha, they reached Adas railway station to board a train where they saw some policemen approaching them. They were ready to be arrested, but the policemen, without any provocation, opened fire on them. Manilal died of the bullet injuries the same day. We salute the great martyr. And today we also remember Tanjore Bala Saraswati. Today is her death anniversary. She was also known as Bala Saraswati, who is having his death anniversary, as I said, and who was an Indian dancer and singer in the Carnatic tradition, who was one of the 20th century's foremost exponents of the Bharatnatyam style of classical dance. She was instrumental not only in expanding the performance of this dance form beyond the precincts of the temples where it was traditionally performed, but also in cultivating international appreciation of the art form. Born into a community of female temple servants, or which were known as Devdasis, who maintained the Bharatnatyam tradition, she started training at the age of 5 under renowned Bharatnatyam director. And at the age of 7, she had her own Arangetram at a shrine to the goddess Devi in the city of Kanchipuram and stunned the audience with her rhythmically executed movements. As Bala Saraswati matured, she became ever more adept at both Nritya and Abhinay. As a young teenager, she was seen by
by internationally known Indian dancer and choreographer Uday Shankar, who became an ardent promoter of her performances. And throughout the 1930s, she captured the imagination of audiences across India. For her contributions to Indian arts and culture, Bala Saraswati received a Sangeet Natak Academy Award in 1955 and Padma Vibhushan in 1977. And in 1976, however, the acclaimed Indian film director Satyajit Ray made a short documentary, Bala, as a tribute to her artistic achievement. और अब हम बात करेंगे मानव सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने वाले बाबा आमटे के बारे में, जिनका निधन 9 फरवरी 2008 को हुआ था। वे विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आनंदवन जैसे सेवा केंद्रों की स्थापना की। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन करुणा, सेवा और मानवता का प्रतीक है। And of course, he has received numerous awards and prizes, including the Padma Vibhushan, the Dr. Ambedkar International Award, the Gandhi Peace Prize, the Raman Magsaysay Award, the Templeton Prize, and the Jamna Lal Bajaj Award. He's also known as the modern Gandhi of India. Moving on, we also pay tribute to Shobhna Samarth, who is having her death anniversary today. She was an Indian director, actress and producer who began her career in the early days of talkie movies in the Hindi film industry. An Indian director, actress and producer who began her career in the early days of talkie movies. She started in Marathi cinema. Her first Hindi film, Nigahe-Nafrat, was released in 1935. She is best remembered for her portrayal of Sita in Ram Rajya. And in 1997, she was honored with the Filmfare Special Award for her contribution to the arts. She was frequently cast as the leading lady with the top heroes of the era like Ashok Kumar, Prithviraj Kapoor, Sadhu Mohdak, Trilok Kapoor, Mahipal and Jairaj. And in 1942 came her career-defining film Bharat Milap, directed by Vijay Bhatt and starring Durga Khote as Kaikeyi and Shobhna as Sita. She had made a remarkable performance in that movie. हिंदी सिनेमा में जब सशक्त और यादगार किरदारों की बात होती है तो अभिनेत्री नादिरा का नाम खास तौर पर लिया जाता है। आज नादिरा की पुण्यतिथि है। उन्होंने ऐसे समय में अलग पहचान बनाई जब महिला कलाकारों के लिए सीमित भूमिकाएं होती थी। नकारात्मक किरदारों को भी नादिरा ने सशक्त उपस्थिति और प्रभावशीलता के साथ निभाया। अब उनकी अदाकारी के साथ साथ उस दौर की सिनेमा की झलक देने वाले एक फिल्मी गीत सुनते हैं। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। Just a little trivia about Nadira. Before luxury became a trend, Nadira was one of the highest paid actresses of the 50s and 60s, and she became the first from Bollywood to own a Rolls Royce at that time. जी बिल्कुल। And moving on, today is also the death anniversary of Giri Raj Kishore, who was a renowned Indian Hindi novelist, short story writer and a playwright known for his socially relevant literature, most notably the acclaimed novel Pehla Girmitya on Mahatma Gandhi. A Padma Shri recipient and former IIT Kanpur registrar, his work often explored Gandhian philosophy, the struggles of the marginalized and contemporary social issues. Key aspects of Giriraj Kishore is literary impact. He was awarded the Sahitya Academy Award for Dhai Ghar and the Vyas Samman for Pehla Girmitya. And major works are Dhai Ghar, Ashlaha and Kasturba Gandhi, which was a biofiction. And his writing heavily featured socialist principles and deep insights into social issues stemming from his early rejection of a zamindari lifestyle. हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर गिरिराज किशोर की आज पुण्यतिथि है। वे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। जी। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और गहरी संवेदनशीलताएं दिखाई देती हैं। जी, and today is the birth day of
Paramarjan Negi, who is an Indian chess grandmaster. He achieved the grandmaster title at the age of 13 years, 4 months and 20 days, which made him the second youngest grandmaster in history at the time. As of June 2025, he is the 9th youngest player to achieve this feat, and Negi is an Indian and Asian champion who was granted the Arjuna Award in 2010 by the Government of India. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।